Okay. So Om Shanti. Good evening to all. आज हम वो नया किताब पेपर 2 का नाम बताइए, कौन सा किताब है पेपर 2? कौन बता सकता है पेपर 2 का नाम? काउंसलिंग फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग। काउंसलिंग फॉर हेल्थ एंड वेलबीइंग। Counseling for health and well-being. Counseling for health and well-being. Counseling for health and well-being. Okay. So the paper 1, unit 1. आपका unit 1 में मैं last time भी बताया, you have to, there are 2 main units, like total 5 units. In unit 1 there will be 2 main topics, like here you have psychology and another one is positive psychology and positive thinking. In psychology you have history and origin, definition and scope, basic principles, types of psychology branches. So in the first one, psychology, you have 4 topics, and positive psychology and positive thinking you have another 4 topics. So total 8 topics. I'll give you one and a simplified syllabus. By the end of this session, you remind me, I will give you one PDF where you will have the content in a simplified way so that it will be easy for you to read and remember and do revision. So what is psychology? Psychology derives its meaning from the 2 Greek words psyche, which means soul, and logos, which means science or knowledge. Thus, psychology means the science of the soul, mind, which functions in 3 domains. 3 domains kya kya hai? Cognitive thinking, affective feeling, and cognitive willing by means of thought impressions. So initially, psychology है ना, उसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते थे. साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस माना साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ आत्मा. वो पहले साइकी ग्रीक में आत्मा कहते हैं या कॉन्शियसनेस कहते हैं. साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस था. क्यों कॉन्शियसनेस कहते हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं, फील करते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं कुछ करने का, ये सारा हम ध्यान से, कॉन्शियस से करते हैं. तो उसको मन भी कह सकते हैं या कहते थे. और ये सारा आप कॉन्शियसली करते हैं, ऐसा नहीं ऑटोमेटिक होता है. तो कॉन्शियसली ध्यान से आपकी मन में ये सारा सोचना, अनुभव करना और इच्छा शक्ति, डिजायर करना, ये सब होते थे. और कॉन्शियसनेस के कारण होने से उसको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कहा. उसको स्ट्रक्चरलिज्म भी कह सकते हैं, हम देखेंगे. अभी उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. आप सभी क्या करना है, अभी कोई भी एक ऑब्जेक्ट आपका हाथ में ले सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट. और catch hold of any object. Now you are holding and you become conscious of it. You feel the thickness of the object. So you are feeling about it. And before you lifted this object, you had a thought, I have to lift some object. So there was a thinking, आपने सोचा था इस पेंसिल को उठाना है. सभी सोचा? जी सर. या बिना सोच कर हुआ? सोच कर लिया ना. तो एक इसमें क्या था, थॉट आया था, आपने सोचकर इसको उठाया और उसको टच किया, महसूस हो रहा है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, सॉफ्ट है, स्मूथ है. सो यू आर फीलिंग इट. और ये पेंसिल है,
मेरे को उठाना है, तो ऐसा सोच आने के पहले आपके अंदर एक इच्छा था इसको उठाना है. So that is called intention. You had an intention to lift this pencil first. Because I told you lift some object, so you had an intention to lift one object. Then you lifted one object. Then you started feeling it. So there was an intention. Then there was a thought or the desire. Then along with the thought, along with the object, then you also have the feeling. So all these process, who is doing it? कौन करता है ये सब कुछ? कोई आपके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है क्या, या आप खुद किया? जब ये सब करते थे, आपका और कोई विचार आया क्या? कल क्या करना है? Yesterday what happened? Tomorrow what happened? Did you receive any other thoughts, or you are just focusing on what I was asking you to do? तो मैंने जो बोल रहा था आपने किया, कर रहे थे. There was no distraction. So it is you who are in control of your thinking, feeling, and even the willing, the intention. You have done it. So this everything you are conscious of it. You consciously did it. उसको अलग अलग नाम कह सकते हैं, कॉन्शियसनेस का हो, मन का हो. So the first one, psychology initially इसको कहता था because consciousness was doing everything. So it was called science of consciousness. But later क्या हुआ था? The first one was Titchener, structuralism, 3 states of mind, cognitive, affective and cognitive, science of consciousness. लेकिन फिर बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट वो आकर क्या बताया, वाटसन ने, आप सिर्फ सोचने से कुछ होता नहीं है, अल्टीमेटली आपने किया, आपने पेंसिल को उठाया. He was saying you think, you do a lot of thinking. आप बहुत कुछ सोचते हो, ये करना है वो करना है, अल्टीमेटली क्या करते हैं उसके ऊपर, that is more important. What you do, that is most important. What you think, it is not that important. So later on, science of consciousness, वो सही है ना, हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन करता है सब कुछ नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं, सोचता ज्यादा है करता कम है. सो क्या करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट व्हाट मैटर्स. तो इसके लिए पहले साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस था, फिर उसको साइंस ऑफ बिहेवियर कह दिया साइकोलॉजी को. फिर तीसरा आ गया जेस्टाल्ट माना इट मीन्स होल, कंप्लीट. सो जेस्टाल्ट क्या बताता है, ठीक है आपने करते हैं लेकिन अकेले आप कुछ करते नहीं है. अकेले माना आप सिर्फ करते रहता नहीं है. You don't just keep doing things, you also keep thinking, you also keep experiencing, keep feeling. तो जेस्टाल्ट क्या बोलते हैं, इट इज अ कंबाइंड प्रोसेस. कॉन्शियसनेस का भी है, सोच भी है, फीलिंग भी है, साथ साथ एक्शन भी है. तो उन्होंने कोई भी जेस्टाल्ट काउंसलिंग टेक्निक्स आप देखेंगे, वो लोग आपका परसेप्शन को ध्यान देते हैं. is based on one's perception and perception influenced by our past experiences. क्योंकि ये पेंसिल बोल के मेरे को कैसे पता है, क्योंकि मैं कोई मेरे को बताया है, बचपन में सिखाया है ये पेंसिल है बोल के. तो एक बार सिखाया मेरे को, इसके लिए मैं अभी बोल रहा हूँ दिस इज पेंसिल. If nobody would have taught me, I would not have said this is a pencil. तो ये activity, it is not just an activity, it also has some perceptions, ideas, thinking, feeling, दोनों मिलके होता है. तो पहला क्या बताया, सिर्फ मन कॉन्शियसनेस का है साइकोलॉजी, फिर बोला इसमें बिहेवियर भी है.
फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बताया नहीं, ये दोनों मिलके हैं। आपके मन में जो मेमोरीज हैं, परसेप्शंस हैं, आइडियाज हैं, उसके साथ साथ थिंकिंग भी हो रहा है, फीलिंग भी हो रहा है। So they said perception is influenced by our past experience stored in our mind. For them, behavior is physical as well as mental. तो दोनों है, फिजिकल और मेंटल। फिर आया सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड क्या बताया? उनका साइको एनालिटिकल मॉडल, इसका क्या है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो होता है और ईद होता है। ईद माना हमारा जो बच्चों को होता है ना, खाना है तो खाना है तो रोना पड़ेंगे, वो नहीं सोचेंगे अभी क्लास चल रहा है, अभी रोना नहीं है, बात करना नहीं है। तो वो ईद, इंस्टिंक्ट डिजायर्स। और दूसरा सुपर ईगो, नहीं अभी क्लास चल रहा है, अभी हमको रोना नहीं है, अभी कुछ बात नहीं करना है, तो सुपर ईगो कहते हैं। और ईगो क्या बोलते हैं, नहीं अभी 8 बजे हो गया, 8:30, हम बहुत देर से क्लास सुन रहे हैं, हम क्लास में बताएंगे अभी भूख लग रहा है, हम खाना खाकर आएंगे। या कभी सोचेंगे ठीक है अभी नहीं है, हम बाद में ही फाइनल करेंगे, तो बाद में ही हम खाने के लिए जाएंगे। तो एनालाइज करके एक बताता है। तो जो पहले एक इच्छा आ गया आपको करना है, और दूसरा क्या है, नहीं अभी नहीं करना है, क्योंकि हमारा बचपन से कई चीज हमको बोला है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना है, ऐसे ही करना है, तो सुपर ईगो कहते हैं। और ये सब बैलेंस करके चलता, हर वक्त हमको ये दोनों चलता है, ये चाहिए, ये नहीं करना है, नहीं अभी बैलेंस करके हम करेंगे, उसको ईगो कहते हैं। बैलेंस करके सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। तो ये साइको एनालिटिकल मॉडल भी कहते हैं। और सिगमंड फ्रॉइड का हीलिंग क्या है, कोई भी प्रॉब्लम्स इंसान के अंदर होता है, मेंटल प्रॉब्लम्स, उसका मूल कारण क्या होता है, हमारा बचपन में जो भी हमारे अंदर रिकॉर्ड हुआ है मन में, सबकॉन्शियस में, या मेमोरीज बचपन से लेकर आज तक जो हम लोग स्टोर करके आए हैं, उसके कारण हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं या कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं। तो उसको हम सोच समझने से, उसको मन से निकालने से, उस टेंशन को दूर करने से हम नॉर्मल हो जाते हैं। यही चीज सिगमंड फ्रॉइड का साइको एनालिसिस है हिप्नोथेरेपी, जो हम पहला किताब पेपर 3 में जो भी हम प्रैक्टिस किया, उसका नाम हिप्नोथेरेपी है, लेकिन वही साइको एनालिटिकल टेक्निक है। सिगमंड फ्रॉइड का टेक्निक भी वही है, सिर्फ नाम थोड़ा अलग है उसका। मैं ठीक है मैं बता दूंगा। पहले पहले क्या था, मेस्मर बोल के एक व्यक्ति था, वो क्या करते थे, कोई भी बीमार आते हैं, बीमार माना उस समय मोस्टली ये हिस्टेरिकल डिसऑर्डर्स, जो मेंटली प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकली ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है। तो ऐसे प्रॉब्लम को उन्होंने रिलैक्स करके और कुछ एनर्जी देकर, एनर्जी माना हम लोग जो आपने देखा होगा रेकी में, प्राणिक हीलिंग में जो एनर्जी देता है ना, एनर्जी देकर हीलिंग करता है, अकुपंक्चर, अकुप्रेशर, वो ची कहते हैं, प्राणा कहते हैं। तो मेस्मर ने ऐसा करते थे, लेकिन वो फिर उसके बाद जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स आए, इवन डॉक्टर मेस्मर वो भी डॉक्टर था, लेकिन जो बाद में आया वो डॉक्टर्स ने क्या बताया, नहीं उसमें कुछ एनर्जी ऐसा कुछ नहीं है, ये आप सारा मन की बात है, ऐसा बोल के उन्होंने क्या बताया था, जो आप ट्रांस में रहते हो, ट्रांस माना जो उस दिन मैंने आपको रिलैक्स करके कुछ फोकस सारा कराया था, तो ऐसा ट्रांस स्टेट में हम हमारी पुरानी बातों को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, उसको मन से निकालने से कई सारा प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दूसरा एक थियरी भी है,
उस रिलैक्स स्टेट में आप कोई भी सजेशन खुद को देते हो, अभी एज अ काउंसलर आप देंगे आप ठीक हो गया, तो उस डीप रिलैक्स स्टेट में कोई व्यक्ति आपको बोला आप ठीक है, तो आपने मान लिया। अभी मैं आपको बोलूंगा सभी हाथ थोड़ा उठाइए, ऐसा लिफ्ट योर हैंड्स। तो आई होप मोस्ट ऑफ यू लिफ्टेड योर हैंड्स, ठीक है। हाँ ठीक है, आपने ऐसा भी हाथ रेज किया, अच्छा है। तो अभी जस्ट कीप योर हैंड्स डाउन। तो मैंने बोला आपने किया, तो सेम प्रिंसिपल एज अ थेरेपिस्ट आप बोलेंगे आप ठीक हो गया, तो आपका मन उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है मैं ठीक हूं। सो सजेस्टिव थेरेपी क्या है, कुछ सजेशन आपको देते हैं, वो सजेशन को आपने एक्सेप्ट कर लेता है और आप मान लेता है, तो आप बिल्कुल ठीक हो गया, हमारा ठीक हो जाता है आप। और इसको पहले क्या था, मेस्मेरिज्म बोलते थे, बाद में जेम्स ब्रेड बोल के एक डॉक्टर था, उन्होंने बताया ये आप जैसे फोकस करके रिलैक्स करके ये करते हैं ना, इसके लिए इसको मेस्मेरिज्म का नाम चेंज करके हिप्नोसिस बोल दिया। हिप्नोसिस का सही शब्द अर्थ क्या है, हिप्नोसिस मीन स्लीप। जैसे उस दिन मैंने आपको सुलाया था ना, रिलैक्स कराकर सो रहे थे, लेकिन मन अलर्ट था, वो नॉर्मल स्लीप नहीं है, इट इज एन मेंटली अलर्ट फिजिकली asleep। मन जाग रहा था लेकिन शरीर सो रहा था। तो ऐसे स्लीप को, ऐसा स्लीप होते हैं इस प्रोसेस में, इस हीलिंग में, इसके लिए उन्होंने नाम दिया, मेस्मेरिज्म का नाम छोड़ के हिप्नोसिस कह दिया, क्योंकि हम सोते हैं, मन से सोते नहीं, शरीर से सोते हैं। फिर उस स्टेज में कई सारा हीलिंग होता था। मैं आपको एक स्पिरिचुअल हीलिंग काउंसलिंग सेंटर बोल के एक वीडियो भी भेजा था, उसमें लास्ट में डॉक्टर एसडेल का एक लिस्ट था कैसे वो हीलिंग करते थे। क्या क्या वो डॉक्टर एसडेल क्या किया था, जब हमारा ब्रिटिश टाइम में कलकत्ता में कई पेशेंट्स को जो प्रॉब्लम लेकर आते थे इस डॉक्टर के पास, डॉक्टर एसडेल के पास, उनके पास उस समय वो एनेस्थेसिया नहीं था, एनेस्थेसिया नहीं करते थे, वो उनको बेहोश नहीं करते थे। So without giving anesthetic to the patients, he found it was very difficult for him to perform complicated operation, and so many people died because of blood loss and because of that complicated operations without giving anesthesia. तो उन्होंने क्या किया, he has learned this mesmerism technique where what he used to do, he used to have some 8 to 10 people with them with good energy, with good prana in their body, and they make the patient relaxed. जैसे उस समय मैंने आपको रिलैक्स कर रहे थे, physically also like reiki, pranic healing, people give the energy and make the people go into sleep. So it is like a trance state where the person is alert, the body is in deep sleep. और उस स्टेज में डॉक्टर एसडेल he used to perform complicated operations. And he noticed when he did operation in that stage, there was not even a single case of death. पहले क्या था, लोगों को ऑपरेशन करते समय कई लोग मर जाते थे, लेकिन इस ट्रांस स्टेट में जब ऑपरेशन करता है, कितने भी कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन हो, काटना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी करना है, one is the healing was quick, second there were no complications, third there was not a single death, and fourth, not only operation, there are so many other diseases were healed, cured, just being in that state of trance. तो उन्होंने ऐसा कौन से बीमारी को ठीक किया था, मैं आपका वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेंटर वीडियो भेजा ना, उसमें लास्ट में एक चार्ट है, उसमें उनका रिपोर्ट है, ऐसा कितने केसेस को उन्होंने ठीक किया
उस mesmerism trance से, जो हम लोग वो पेपर 3 में आपको मैंने सुलाया था ना, रिलैक्स कर रहे थे, ऐसे ही सिमिलर टेक्निक, बट इट इज समथिंग, है ना, देयर इज सम डिफरेंस वेयर यू गिव एनर्जी डायरेक्टली इंस्टेड ऑफ गिविंग सजेशन. तो जेम्स ब्रेड ने उसको हिप्नोसिस नाम दिया. फिर उसके बाद पेरिस में 2 स्कूल था, जीन चाको एंड बर्निम, ऐसा 2 लोग अलग अलग स्कूल चला रहे थे. उधर भी ऐसे ही करते थे, लोगों को रिलैक्स करके कैसे मन की बीमारी को ठीक करता है, वो बहुत लोगों को करते थे. ऐसा दोनों स्कूल अलग अलग करते थे. तो जीन चाको का प्रिंसिपल क्या था, ये हिप्नोसिस है, इससे है ना ठीक हो जाता था, हिस्टीरिया केसेस ठीक होता था, कई सारा मेंटल डिसऑर्डर्स भी वाज ट्रीटिंग अलोंग विद द मेडिसिन. लेकिन वो डॉक्टर बर्नी, उनका टीम में ऐसा था, जो दवा देकर लोग ठीक नहीं हो रहा था, उनको वो लोग बोल रहे थे, देखो हम लोग आपको है ना हिप्नोसिस करा देंगे, आपको विलिंग है तो कर दो, हम एक बार ट्राई करेंगे. तो कई लोग जो ठीक नहीं हुआ, उन्होंने दे एग्रीड फॉर दिस सजेस्टिव थेरेपीज एंड so many people got healed. I think उनका भी मैंने लिस्ट दिया है उस वीडियोस में. So what I'm saying, the same technique. तो एक था by giving energy they were healing people. Another was in a relaxed state, when you give suggestion people got healed. And third process क्या था, जैसे मैंने उस दिन पेपर 3 में कराया था, आपको कोई पुराना इंसिडेंट से उसको एक्सपीरियंस करके विजुअल करके उसको वेंट आउट करके ठीक करना. इवन दिस एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट उस हॉस्पिटल्स में. तो वन वाज जोसेफ ब्रॉयर था जीन चाको के साथ, जोसेफ ब्रॉयर, और वो स्टूडेंट था, इंटर्नशिप के लिए गया था, उनके साथ सिगमंड फ्रॉइड भी था. तो सिगमंड फ्रॉइड इस जोसेफ ब्रॉयर का ये टेक्निक देखा है, कैसे वो वेंट आउट करने से वो बीमार ठीक हो जाता है. तो उन्होंने बोला इसको कुछ रिलैक्सेशन कुछ करना नहीं है, लोगों को सिर्फ बिठाओ, कंसंट्रेट कराओ, वो पुराना चीज याद कराओ, ठीक हो जाता है. It is by means of concentration. Even relaxation में हम उस दिन देखा, you were fully concentrated. So that relaxation also give you a lot of concentration. And Sigmund Freud said, I don't have to make the people and give commentary and make them relax. I just make them focus on something and release all those past emotional issues. So जो suggestion देकर ठीक कर रहा था, उसको hypnotherapy कहते थे. और पुराना चीज को याद करके मन से वेंट आउट करता था in relaxed state, that is also called as hypnotherapy. And the without relaxation also, when you went out the emotions, which was practiced by Sigmund Freud, उन्होंने उसको अलग नाम दे दिया. उनका नाम था साइकोएनालिसिस. तो ये कहां से शुरू हुआ, मेस्मेरिज्म से शुरू हुआ, हिप्नोसिस आया, फिर हिप्नोथेरेपी आया, सजेस्टिव थेरेपी आया, उसके बाद साइकोएनालिसिस आया. फिर साइकोएनालिसिस के बाद एनालिटिकल साइकोलॉजी, कार्ल यंग बोल के, वो भी सिगमंड फ्रॉइड के साथ ही रहता था, उनका स्टूडेंट जैसा था. So he said the unconscious has got lot of memories, because Sigmund Freud was mainly focusing on some like sexual issues. He was saying because of that sexual issues people are getting into problems. But then Carl Jung said it is not just focusing on sexual issues, it is also because of all the disturbed emotions which people are holding, that is which causes trouble, mental troubles. So this is the history, how the psychology and hypnotherapy, the psychoanalysis, it's all very much connected. So now you will find, first it was called a science of consciousness, फिर it was a science of behavior, फिर उन्होंने Gestalt में बोला it is not just behavior, it is also connected with our perceptions and past memory. फिर Sigmund Freud ने बोला वो psychoanalysis, hypnotherapy आ गया उसके बाद.
देन कार्ल यंग ने बोला वो पास्ट एक्सपीरियंसेस कनेक्टेड है। फिर उनके साथ एडलर था, उन्होंने बताया जो हम बचपन में फैमिलीज में 3-4 बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, छोटे होते हैं और बहुत छोटा होता है, तो कौन से एज में रहता है वो हिसाब से उनका बिहेवियर बन जाता है। फिर वो एक साइंस था साइकोलॉजी में। उसके बाद पेजे आया। पीजे क्या बताया था, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। उन्होंने सेम साइकोलॉजी में कुछ थियरीज ऐड किया, कैसे बच्चे कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे अडल्ट बन गया तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, कैसे बच्चे सोचते हैं, कैसे कैसे अडल्ट सोचता है, हाउ अडल्ट पीपल थिंक, हाउ ए चाइल्ड थिंक, लाइक प्री ऑपरेशन, ऑपरेशन स्टेज, पोस्ट ऑपरेशन स्टेज बोल के उन्होंने बताया। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका वो फ्रंटल लोब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है जब तक वो एडोलेसेंट अबाउट 19 to 21 ईयर्स तक बच्चे बड़े होते नहीं है, उस समय तक उनका एनालिटिकल प्रोसेस पूरा होता नहीं है, उनका फ्रंटल लोब है ना पूरा डेवलप नहीं होता है। आफ्टर एडोलेसेंट एज, जैसे आफ्टर 19 ईयर्स और 21 ईयर्स, उसके बाद ही उनका ब्रेन पूरा डेवलप होता है। इसके लिए बच्चों को है ना हैंडल करना थोड़ा दिक्कत होता है माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप कुछ बोलेंगे अडल्ट के हिसाब से, लेकिन एडोलेसेंट के हिसाब से वो मानेगा नहीं, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा क्वेश्चंस भी होता है, उनको सोच समझकर डिसीजन लेना उनको मुश्किल होता है, क्योंकि देयर वाज द फ्रंटल लोब इज नॉट फुल्ली डेवलप्ड। इवन मॉरल डेवलपमेंट, इवन पीजे के हिसाब से कोलबर्ग का भी थियरी है, वो मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है, जजमेंट कैसे करते हैं बच्चे लोग, उनका सेल्फिश डिजायर होता है। सेल्फिश डिजायर माना वॉट एवर दे वॉन्ट, बेस्ड ऑन दैट दे टेक ए डिसीजन, और वॉट एवर दे सी, बेस्ड ऑन दैट दे टेक ए डिसीजन। दे कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट वे। कोई एक प्लेट तोड़ता है, जैसे फ्रिज खोल के कोई चॉकलेट चोरी करके खाता है तो एक प्लेट टूट गया, वन plate got broken when a person tried to steal chocolate from a fridge. Another person, he just walk in a crowd and he breaks some 15 cups without knowing, without his knowledge. So according to the child, the crime is when a person breaks 15 cups, it is a big crime. It is not the one plate the person who broke while stealing the chocolate or something else. तो उनका नंबर के हिसाब से, इंटेंशन के हिसाब से नहीं होता है। बट नाउअडेज जजमेंट कैसे होता है, they look for the intention. What is your intent while committing a crime? Is it really you are intending to commit a crime? Then you will be blamed. But as a child, when there is no intention to committing a crime, the child will not be blamed. इसके लिए हम juveniles को अलग, they don't consider them as a criminal. Up to 19 years, 21 years, although they feel they have done a mistake, they are treated in a different way. They are treated in such a way that they can transform and come back, live a normal life. But as an adult, if you commit a crime, then the treatment is different. Okay. So PJ explains about the cognitive development, and Carl Roger, he explains about the humanistic psychology, like Maslow, Viktor Frank. What they say, it is like our Rajyoga principle. You have the inner qualities of peace, love, happiness, joy, and you don't have to focus on whatever the negative things you have committed. Instead, focus on all the strength, positive things. So the counseling based on all the positive aspects, it is called as humanistic psychology. And based on that, Martin Seligman ka positive psychology bhi hai. It is based on the positive aspects of human being. They don't talk much about what happened in the past. आपने बहुत कुछ गलत किया होगा या कुछ परेशान में होगा, but they look for what is the good thing you have in your life. आपका strength क्या क्या है, strength के ऊपर they do the counseling, humanistic psychology and positive psychology. So this is how the psychology, there was a growth in psychology.
Then, and you should know this, we call Wilhelm Wundt as father of psychology and William James as father of American psychology. And father of modern hypnotism, we call Milton Erickson. Okay, so this is about the history of psychology. So basically what according to your training, we are going to look at this training as a holistic healthcare. We are not just focusing on the psychology, we are also focusing on the biological aspect, we are also focused on the social aspect, we also focus on the spiritual aspect. See, earlier when we started this course, we introduced long back in Annamalai University. That time, even in psychology, they don't teach the holistic concept of treating the people. But now, at present, they have included most of the subjects. But what we deal here in your course, it is in detail. We just focus what is more important for the counseling, and we focus on the psycho-biosocial and the spiritual aspects for the healing. So here, normally when a person comes to counseling, there was little attention to the process of thinking, memory, emotion, outlook, attitudes, personality, lifestyle, persons, and the book what the person reads, films what they watch, the company what they keep. So this has become one of the major cause for the worldwide ill health. So that's why this course focuses on all these aspects. इसके लिए राजयोगा हम बार बार क्यों इसमें हर लेसन में आप राजयोगा क्यों सीखते हैं? इसमें we focus everything, psycho-biosocial, and you will find something which is missing in the psycho-biosocial aspect of psychology. There is something missing which we learn in psychology, which we learn in Rajyoga. So it becomes a holistic approach. The missing part of psychology we cover, and so that people, the healing happens quickly. There is a very good transformation and easy transformation. And mostly we focus on everything. See, for example, I'll tell you once again. See, I asked you to lift the pen or pencil or any object, and because you had the memory of pencil, आपको पहले pencil बोल के कोई ने बताया, आपको मालूम पड़ा ये pencil है. ऐसा ही the behavior, the problems we do, the behave, the neurotic behavior, the stressful behavior, the behavior which doesn't have any self-control, all these are all we have learned in the past. So it is not just we are acting out, it is because we have it in our memory. So in psychology, you should understand what is perception, what is thinking, what is memory, what is behavior, what is motivation, what is decision making, what is a personality. All these basic things, like here you will see in the screen, what is thinking. So it means what is a mind, what is memory. जैसे last time I asked you to remember, आपको बोला आपने breakfast क्या खाया, school कौन सा school में पढ़ा. So it is there in the memory, and each memory has carries, or you feel, think along with some type of feelings and emotions which you are holding in the past. And based on that, there is an outlook. How do you see things? And all these memory, you are looking at the pencil, you have stored it, there is a memory, there is an idea, there is a belief, and these idea, belief makes you to behave in a particular manner. And that is called as attitude. So this attitude you keep accumulating, which becomes an habit, sanskar, and these bundle of thoughts, feelings, emotions, जो भी आपने देखा, सुना,
रिकॉर्ड किया फीलिंग्स का, इमोशंस का, these complete bundle we call it as a personality. It becomes your lifestyle, and it all happens by the book you read, by the movies what you watch, by what you heard from your parents, teachers, friends, the company whom you keep, and the food what you eat, that also affect you, and the surrounding things what you see again and again, whether the person is committing a mistake again and again, then it becomes a habit. So आपने 5 इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, फीलिंग से जो भी अंदर गया, वो सारा आपका पर्सनालिटी बन जाता है. इसको एक थियरी है कैसे आपकी घर का वातावरण, स्कूल का वातावरण, आपके बाहर की वातावरण और आपके पेरेंट्स की जॉब की इफेक्ट, ये सारा है ना, जो भी 5 इंद्रियों से अंदर जाता है ना, वो सारा आपका पर्सनालिटी बन जाता है. एंड पर्सनालिटी इज नथिंग बट योर हेल्थ. Okay, that slide I'm not to be seen. So what you should understand, psycho-bio-social, it becomes your personality and it also becomes your health. So if you want to change your personality, if you want to change your health, in the sense the disease, if you want to make it ease or get rid of your disease, you have to work on your thinking process, memory, the emotion, the outlook, attitude, personality, सब कुछ बदलना पड़ेगा. So I'll post you one link, Power of Signs and Silence. Copy. See this link, I just listed out all these definition for the mind, memory, emotion, attitude, personality, and I also given a spiritual definition for it and psychological definition. So these definitions, it will very important to understand the basics of psychology, because all these things you have to change, transform if you want to deal with health, if you want to do a proper counseling. तो ये एक एक चीज है ना, आपका किताब में नहीं है, एक एक का स्मॉल डेफिनेशन. ये लर्निंग किसको कहते हैं, इमोशन किसको कहते हैं, थॉट्स, एटीट्यूड किसको कहते हैं, that list I have posted now in that link, so you can go through it later on. So that will be very important for you. So what next? So the basic definitions you understand in psychology, and you understood the history of psychology, and the psychology, to be a better counselor, along with the psychology, you also have to understand spirituality. So in Upanishads, they explain our body is divided into 5 layers. Like Taittriya Upanishad, I will post a video later where I have explained how it is explained in Taittriya Upanishad. And in Mandukya Upanishad, they explain about the stages of consciousness, the waking stage, sleeping stage, dream stage, and the self-conscious stage. And here, the 5 layers of a human being or the personality are divided into Annamaya Kosha. Annamaya Kosha is the physical body, Pranamaya Kosha, the energy body, what we were discussing. वो mesmerism का energy का बात किया ना, जो रेकी का, प्राणिक healing का या acupuncture का, that energy
where it has got so many chakras, but there are main 7 chakras, which is called the energy body, which is called made up of prana. Then there is the mind, there is the intellect, pranamaya kosha, manonmaya kosha, vigyanmaya kosha, that is intellectual body, and anandamaya kosha. So these 5 layers, let us try to understand. You know this physical body, okay? You are moving this physical body. So annamaya kosha. But before moving this, you give signals. You think that you have to move this body. Aapne socha, I have to move this finger. So there is an neuron firing and it creates energy. So biologically also you can say there is an electric body, and spiritually also the prana, like last time we experienced that breathing happens automatically. So the pran shakti, Ayurveda में भी है ना वो वात पित्त कफ, वो not only physical, वात पित्त कफ is not just physical, even the different types of prana, like apan, ऐसा they give different names, but basically it is a prana. So that prana is called as vat pit kaf. It divides into vat pit kaf, and if it is a balanced, then no disease. If it is imbalanced, the disease arises. So वो प्राण शक्ति भी है, इसके लिए मैं हाथ हिला रहा हूं. फिर उसके बाद मन भी है, मन ने सोचा, you thought the body has to move, then intellect took a decision, ठीक है मैं हाथ को हिलाऊंगा. But when we detach from all these thinking process, when we detach from the 5 senses, let us practice now. अभी practice करेंगे, सब कुछ देखना है 5 इंद्रियों से. कानों से सुन रहे हैं, smell, taste, feeling of touch. So you applied full stop to the past and the future thinking. So you detach from the mind, मनोन्मय कोशा से detach हुआ. फिर you have intellectually you decided, okay, let me focus. No, it is about this. Okay. So okay, so the 5 layers enveloping Atman, core of personality. So when you become aware of your 5 senses, it means you are detached from your manomaya kosha. Then intellectually you are focusing on the silence. And because of your mind is quiet, your 5 senses are detached, then you feel the bliss. Smile. When you are free from responsibilities and thinking process, when you are free from the 5 senses, you feel you are detached from the physical body, you become straight with the lot of pranic energy, and you feel that bliss, smile within you. So these are the 5 layers. The more you experience this joy within you, usko bolte hain anandamaya kosha. और उस सच्चिदानंद, that is the truth, consciousness, that peace, love, happiness that exists all the time. So in that consciousness you connect with the God. And Mandukya Upanishad में भी कहते हैं, this is called the Om. Om माना the silence stage. It is called a Turiya stage. Turiya, or when you connect with the God, it is called Turiya Teeth. So you are not sleeping. It's not Shushupti. Waking stage, dreaming stage, sleep stage, and the stage of silence. And in that stage of silence, one is just be aware of the silence. And next is Turiyatit, you become blissful, connecting with the God. So the missing factor between the psychology and spirituality
See, unless you experience this bliss, the pure consciousness, you cannot get rid of disease, because you cannot become still, you cannot be detached from your thinking process. You will be always thinking, worrying. You do not know how to, why to detach, where to detach, how to detach, and where to connect. So when you know this is my pure nature of peace, love, happiness, joy, then you detach from the thinking process and connect with that, and you connect with the Supreme. Lot of research says whoever has belief in God, then they have an advantage of getting healed quickly or overcoming problems easily. भगवान है या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, रिसर्च क्या कहते हैं, जिसके अंदर भगवान के ऊपर विश्वास है वो कई प्रॉब्लम से दूर रहते हैं. उसका मैं एग्जांपल दूंगा. एक आप इस चैट बॉक्स में इस वीडियो को देखिए. ये डॉक्टर जॉन डायमंड एक साइकियाट्रिस्ट का है. ये वीडियो में पहले एक एडवर्टाइजमेंट होगा. वंस द एडवर्टाइजमेंट गेट्स ओवर देन यू विल सी दिस वीडियो. इसमें इन्होंने क्या बताया, एक हॉस्पिटल में दो व्यक्ति था, उनको कोई बीमार है, शायद कैंसर है, ऐसा कुछ है. दोनों के एक ही है, एक ही ट्रीटमेंट है, एक ही दवा है, सब कुछ एक ही था, एज भी एक है, लेकिन एक व्यक्ति मर जाता है, एक व्यक्ति ठीक होकर चले जाता है. क्योंकि वो व्यक्ति जो ठीक हुआ ना, वो हमेशा खुश रहते हैं. वो डॉक्टर भी आ गया, उनको खुशी से इनवाइट करता था, हेलो बोलता था, बात करता था, और दूसरा व्यक्ति हमेशा दुखी रहता था. ओ मेरे को बीमार हो गया, ये हो गया, क्या होगा, कैसे होगा. तो जो खुश रहते थे वो ठीक हो गया, सब वो एक ही ट्रीटमेंट से, लेकिन दूसरा व्यक्ति मर जाते हैं. तो पॉजिटिव थिंकिंग फीलिंग्स कहाँ से आएंगे, वो होप कहाँ से आएगा. So that is where spirituality plays an important role. Even you can find a lot of research papers in the Google where they say those people who are spiritual, who believe in God, they easily overcome the illness or the disease or the problems they face in their life. So here, this practice where we detach from our senses, mind, and get connected with our inner peace, love, happiness, and experience the godly companion, we become combined with the God. So that thing, that peace, love, happiness, purity, and bliss, this gives a lot of power, energy, positivity for the human being. And it transforms the nature very easily. We have a lot of examples, even in, even I have published one research article on this, how the consciousness, as a counselor, how you can make use of it. I'll send you the link. You can go through it with the Rajyoga and with these techniques, whatever we discuss, how it is going to help. Okay, that I will post. So these are the benefits of being spiritual or by learning spirituality. This is the advantage over psychology. I think somebody want to say something. Yes, you may say. अच्छा माइक ऑन करना है ना, एक मिनट, कैसे करता है? Ask to unmute. You can unmute. If you want to say something, you may say. I have unmuted. Okay, nothing, I think. Okay, fine. So next is in psychology, there are different branches: cognitive psychology, clinical counseling psychology. What you are learning is almost like clinical and counseling psychology.
Then cognitive, how the thinking process happens. They do research on that and submit reports. Help people overcome cognitive problems. Developmental psychology, educational psychology. So there are different branches in psychology. So positive psychology and positive thinking. Here you learn values in healthcare, moral education, integrated personality. So people with an optimistic style and thought tend to cope more effectively. मैंने video भेजा ना based on this only, optimism, with life stresses than do people who have a pessimistic style. Those who scored high on optimism before the surgery made quicker recoveries than did those who scored low even when the medical conditions that led to surgery were equivalent. So जो पॉजिटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, आपका पेपर 3 में भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे नॉर्मन कसिन्स, डॉक्टर बेन अलेक्जेंडर, अनीता मुरजानी, देवर वो पॉजिटिव मेंटालिटी, ऑप्टिमिज्म से हाउ दे ओवरकम द डिजीजेस, those examples are there. And mainly the values. See, even these values, a lot of values we have given in this chapter, 40 major values, values for a better world, 12 king groups. It will be found that these values, if adopted in every profession, age group, etc., would certainly make our society and situation better. So all these values practice karna mana when you become integrated personality, like when you maintain a balance between being busy in job and being easy at the same time, being flexible and firm, humble and giving respect for your own self and others, being detached observer, practicing silence even while speaking, being serious and being cheerful and careful, official and informal, alert and relaxed. So it is like a balance of qualities. And these balance of qualities, how we can learn? Unless you know how to detach from the thinking process, how to detach from your senses, how to detach from the physical body, unless you have this practice, you cannot maintain this. See, योगी उसको कहते हैं जो जहां चाहे, जब चाहे, जितना देर चाहे, कोई भी एक जगह पे फोकस करके अपने काम कर सकते हैं, उनको योगी कहते हैं. इवन पतंजलि इस योग सूत्र में आप देखेंगे धारणा ध्यान समाधि. धारणा ध्यान समाधि कुछ नहीं है. धारणा माना आपका हर चीजों से मन को हटाकर एक जगह में फोकस कर सकता है आप. ध्यान माना जहां आप फोकस किया वहां लंबे समय तक फोकस कर सकते हैं. समाधि माना जहां फोकस किया उसके साथ एक हो गया आपने. जैसे हम काम करते हैं, कितना फोकस करके हम करते हैं, तो उसमें सब कुछ आपका कंट्रोल में आ जाता है. पतंजलि योग सूत्र में 8 शक्तियां लिखा है. छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, आप जो चाहेंगे उसको वश कर सकता है. ऐसा बहुत चीज है. लेकिन हम सोचते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं है. हमारा दिनचर्या में सुबह से शाम तक जो हम कर्म करते हैं उसमें उसका पावर है. सिंपल एग्जांपल, आपको मैथ्स एक सिंपल मैथमेटिक्स प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, उसका फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको लगेंगे वो इतना सिंपल है. जैसे एक कंप्यूटर ऑपरेट करना पहला आता नहीं है, आप बैठ के एक बार है ना ट्राई करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर खोल के मैं स्टार्ट करके देख लूंगा, तो उसको धारणा कहते हैं. आपने हर बातों से हटकर कंप्यूटर खोल के शुरू करना, बैठ के शुरू कर दिया आपने, उसको धारणा कहते हैं. और ध्यान क्या है, फिर आप एक एक कीज को ABCD टाइप करना शुरू किया, खोलना शुरू कर दिया, कुछ करना, आपके मन उसको लगा रहा है, आप उसको ध्यान कहते हैं. और ऐसा करते करते आप देखेंगे बहुत इजी हो गया, मैं कंप्यूटर चलाना मैं सीख लिया, तो उसको समाधि कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर क्या है आपको समझ आ गया. तो ये धारणा ध्यान समाधि और स्पिरिचुअलिटी हम सोचते हैं कुछ अलग चीज है, वो जो सब कुछ कर्म करने के बाद हम स्वामी जी बन जाएंगे, जंगल में जाकर बैठेंगे या पूजा करते रहेंगे. लेकिन रियल स्पिरिचुअलिटी आपकी दिनचर्या में करना है.
जहां चाहे मेरा मन को सब चीजों से हटाकर जो कर्म करूंगा उसके ऊपर ध्यान दूंगा, और जैसे कर्म पूरा हो गया उस वहां से मेरा ध्यान को हटाकर मेरे अपने अंदर जो भी शांति प्रेम आनंद है उसका अनुभव करूंगा। फिर वहां भी धारणा ध्यान समाधि। धारणा क्या है? हर बातों से, मन से शरीर से अलग हो गया, 5 इंद्रियों से अलग हो गया, धारणा। प्रत्याहार कहते हैं ना, प्रत्याहार के बाद धारणा आता है, और धारणा के बाद ध्यान। तो मेरे अंदर शांति प्रेम आनंद का उसको मैं अनुभव करूंगा, ध्यान हो गया। और समाधि क्या है? जो परमानंद है, परमात्मा का भी वही गुण है बोल के सिर्फ परमात्मा के प्यार में खो जाता है, समाधि हो जाता है। तो धारणा ध्यान समाधि हमारा कर्म में भी है, हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी है, हर प्रैक्टिस में हमारे ध्यान को कैसे हम यूज करते हैं। तो वो व्यक्ति जिसके अंदर कंट्रोल आ जाता है, स्पिरिट जो कर्म करेंगे उसमें भी वो अच्छे से कर सकते हैं। खेलता है, अच्छे कर सकते हैं। ऑफिस में काम करते हैं, अच्छा ऑफिस काम कर सकते हैं। जो अपने स्पिरिचुअलिटी सबसे डिटैच करके परमात्मा से कनेक्ट हो जाए वो भी अच्छे से कर सकता है। तो योगी इज द वन who is able to detach from everything whenever he wants and focus on something whenever he wants and however long he wants, and then he becomes one with that, then he is able to detach whenever he wants. So the attention, जैसे मैंने पेंसिल बोला, चाहे मैं पेंसिल को उठाया, उसको अनुभव किया, फिर मैंने रख दिया, चाहे मैंने हाथ को उठाया, उसको ध्यान किया, अच्छा मेरा हाथ ऐसा ऐसा है, अनुभव किया, फिर उससे डिटैच हो गया। धारणा ध्यान समाधि। तो इसको जब ये आपको प्रैक्टिस करके आ गया जीवन में, फिर आप you can be busy at any time, you can also be easy, you can be flexible because you are not attached with anything. Flexibility किसको नहीं आ सकता है? क्योंकि उनको ऐसे ही होना चाहिए। जो हार्ट का बीमारी होता है ना, वो सारा व्यक्ति का आदत यही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए, एग्जैक्टली होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। वो स्टबर्ननेस होता है ना, उनका हार्ट का डिजीज होता है, उसका रिसर्च बताता है। एंगर होता है, स्टबर्ननेस होता है, जिद रहता है ना, उनका ऐसा प्रॉब्लम्स आता है। फर्मनेस, लेकिन हम जहां फर्मनेस चाहिए वहां फर्म रहेंगे, फिर अलग हो, रिलैक्स हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया। और ह्यूमिलिटी कहां से आएंगे? Unless you feel the peace, love, happiness within you, you cannot share that peace, love, happiness with others. Socially, how you can see here balance of detachment and involvement. आज सोशल का मैं कुछ पढ़ रहा था, उसमें क्या बताया? When you interact with the people, there is a neuron called mirror neuron. Mirror neuron क्या होता है? It helps you to empathize with somebody else. If somebody is happy, when you look at the face of the other person, you also become happy, because your neuron secretes similar hormones, makes you happy like the other person. Similarly, कोई दूसरा गुस्से में रहता है, आप उनको देखेंगे, आपको भी गुस्सा आ जाएगा, because that न्यूरॉन आपके अंदर भी बनाएंगे, गुस्से का हार्मोन बन जाता है, आपके अंदर भी गुस्सा आ जाएगा। And in fact, it is helping you to understand the feeling of the other person. लेकिन हम इंसान क्या करते हैं? उस गुस्से में खो जाते हैं, समाधि हो जाता है, फिर क्या करते हैं? झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन हमको वहां क्या करना है? वहां समाधि नहीं होना है, वहां साक्षी रहना है, बैलेंस ऑफ डिटैचमेंट। वहां उस गुस्से में हम डिटैच होकर साक्षी होकर देखना, अच्छा वो व्यक्ति के अंदर गुस्सा हो रहा है, तो मेरे अंदर भी गुस्सा आ गया, मैं भी समझ लिया, अच्छा तो एम्पैथाइज हो गया। लेकिन नॉर्मल साइकोलॉजी में क्या है? वी डोंट हैव मेथड टू कंट्रोल दैट, वी आल्सो बिकम एंग्री एंड वी react instead of responding. But in spirituality, there is a technique. What is the technique? You don't allow yourself to get involved. So you maintain the detachment. साक्षी होकर देखते रहो, मन में विचार मत चलाओ, वो गुस्सा ऐसा चल रहा है, ये कर रहा है, वो व्यक्ति ऐसा है वैसा है, सोचो मत। The moment you start thinking, आप उसमें समाधि हो जाएंगे।
but you detach. You keep connecting with your awareness of peace, love, and happiness. You don't start thinking. You don't get lost in your process of thinking. So here the spirituality is helping to remain a sakshi at that point. So you know when to be a detached observer, and you know when to become a samadhi. You know when to connect with the people. You know when to disconnect with the people. You know when to connect with the job activity. You know when to disconnect with you. So this control, it comes only with spirituality. And I don't think anyone, any other than this Rajyoga, I don't think even Rajyoga, what is taught in Bhagavad Gita, Patanjali Yoga Sutra, Upanishad, they don't explain this in this manner, which we learn from the Brahma Kumaris. Brahma Kumaris में ये ज्ञान है ना, the divine versions, it explains this clearly, how to deal with the people, how to detach from this. And this is the same thing explained in all the scriptures, Upanishads, Vedas, Bhagavad Gita. लेकिन कोई उसको उतना ध्यान से पढ़ते भी नहीं है, समझते भी नहीं है. Okay, so this is what your unit 1. Now, any questions you may ask. हेलो, ओम शांति भाई जी. ओम शांति सिस्टर, बताइए. भाई जी, आप बोले धारणा, ध्यान और समाधि. तो धारणा मीन्स हम आत्मसात करते कोई चीज, तो ऐसा तो नहीं. हम धारणा करते या फिर फॉलो अपने रूटीन में लाते उसी को, मतलब. हाँ ठीक है, वो भी धारणा, वो प्रत्याहार, वो यम नियम आता है ना, वो ठीक है, वो धारण अलग है. वो आप धारण करते हैं, कुछ चीज को धारण करते हैं. यहाँ धारणा ध्यान समाधि उसको कहते हैं जहाँ मन फोकस होता है, अटेंशन होता है. हाँ, वो नहीं, किसी से कुछ मतलब फिर और डिस्कशन हुआ तो उनको फिर इसके लिए बताने के लिए मतलब. हाँ, एक शब्द है धारण, एक शब्द है, लेकिन उसका 2 मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग है. अच्छा अच्छा अच्छा, वो भी सही है. धारणा, आप कुछ जीवन में कुछ धारणा करते हैं, वो भी ठीक है. लेकिन धारणा भी कहाँ से आएंगे? जब तक आप उसको फोकस करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हैबिट नहीं बनेंगे, धारणा कहाँ से आएंगे? वहां भी धारणा ध्यान समाधि होना चाहिए ना. आप उस धारण से, उस वैल्यू से, उस गुणों से आपको, जब तक आप समाधि नहीं होगा, धारणा कहाँ से आएंगे? जी भाई जी, बराबर. ठीक है. हेलो सर, सोनल हियर. यस यस मैडम, बताइए. I have one question. आपने अभी जब बोला कि ध्यान धारणा करनी, तो initially it is easier because there is something different that we are trying. But as you practice it, it happens that you tend to lose your control or you tend to become more aggressive. So does it happen with everyone, and in case it happens, then what is the way to curtail it? That is where the practice of meditation comes. Na? Morning and evening, you have to be in that state at least 1 hour to start with. See, I remember to understand this concept, I used to meditate for 5 hours, 6 hours continuously. Even then, I didn't understood. After so many, it is now. But you don't lose hope, because unless you understand the concept, it is difficult to practice. It is like a story of blind men touching the elephant and say elephant is like a trunk, elephant is like a tail. But to understand the whole concept, it takes a lot of years. But once you understand, and if somebody explains you this is how it works, then it becomes easy for you. So don't think you need a lot of time, but you have to practice this simple example. Now let me tell you, see, the simple way to practice this. I'll give you one more secret technique. What you have to do, focus on a point. Now let us practice. Just focus on a point. Any point. You can even keep a point with a marker on your wall, or put it on a white paper, a point, and hold it somewhere, or a point of light. Your night lamp also, very point you have to see. So what happens? Just focus on a point, any point. And when you focus on a point, what happens? Slowly you will feel that you are
using these eyes as a window, and you are just looking through the window, being a point. It is something like that day I made you to practice, lift your fingers and say that attention. As you move the fingers, your eyes are straight, but the attention is on the tip of the finger. So you will feel that you are not looking these fingers through your eyes, but it is something behind your eyes which is observing it. Similarly, when you focus on a point anywhere, you will feel that you are just behind your eyes. And when you're not thinking anything, but just focusing on that point, it is called Sakshi Avastha, detached observer. It means you are not thinking, you are not creating any thoughts, just you are focusing on yourself. You are just attentive, you are not creating any thoughts. So when somebody is shouting at you or saying something or provoking you, the moment when you know this provocation and they are getting angry, you have to keep your mind still. In the sense, you have to come here. You have to become aware of this, or in simple way, just feel the silence. And that moment, you are not creating thoughts. If you create thoughts, then you will create emotions. So when somebody is provoking, you have to be a detached observer. And for that, the process is just keep quiet. And when you practice in the morning and evening, like by looking at a point, very easily you will understand. Whenever you want, you can get to this awareness. So kuch samay ke liye you have to practice by looking at a point, that the attention is here, I am looking through my eyes. Then what happens, even in day-to-day activities, whenever you become quiet, immediately your attention will go there. And in that attention, you will not create thoughts. Anything can happen in front of you. Unless you create thought, it is not going to affect you. The moment you start creating thoughts, then slowly that feelings, emotions, then you become dharana, dhyana, you become samadhi without those emotions. So, but when you know, okay, 50%, even then, first being a detached observer, 100% attention is here. Then what happens? You keep 50% attention here, and 50% you start creating thoughts to respond to the other person. Again, here you have to notice only 50%. You are not giving 100% attention. So that's what, the more you practice Rajyoga, that peace, love, happiness, joy, as you experience, not just a detached observer, the more you experience that peace, love, happiness. Let us practice now. Now you are silent. At the same time, you feel the lightness, joy. Just smile. So your 100% is attention is on the joy, peace, happiness. Now, if you want to talk to me, I want you to talk to me with that smile, with that happiness, with that joy. Just talk to me with smile. Hello, sir. Okay. So when you're talking, there is no 100% attention on what you're speaking. It is 50% attention on the smile and 50% attention on response. And you will find throughout the day, you don't have to use 100% attention on any activity. In 24 hours, let us say 12 hours, hardly some 5 minutes or maybe some 30 minutes, you need 100% attention on the activity what you are doing. Rest of the time, when you're talking to the person or discussing, or when some issue happens, there is no need for 100% attention. So what you have to do, either you have to keep your 50% attention on the silence, or you keep 50% attention on that inner sweetness, joy, connecting with the God.
and you just respond only 50% to the other person. So in that case, you will not lose your self-awareness and you will not be overcome by that emotion. Okay, so this by practice you will understand. You understood? Yes, sir. Thank you. Okay. Any other questions? See, now I'm not I don't have to focus, so I am smiling. Earlier I was focusing too much, full samadhi. Now it is dhyana. Dhyana in the sense 50-50. I'm smiling and I'm just asking anything you can ask me so that I'll reply. So it is 50% on my smile and joy, connecting with the God, experiencing that Satchidanand, and I am asking you any reply. Okay, so it is 9:18. We will stop here. I can send you that PDF and that simplified syllabus. Sir Vikram class हिंदी में कोई पढ़ेंगे इसको जल्दी? Types of book to. हाँ सर, सर जो मैसेज भेजा है वो पढ़ना है? हाँ पढ़िए. हाँ सर, बुक 2 में जो भी क्लास है वो थोड़ा हिंदी में समझा होना, तब हम होमवर्क करेंगे. आप बहुत इंग्लिश बोलते हैं, सॉरी, हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाता है. ओम अच्छा. शांति. ओके. सो मे बी है ना, आप स्टूडेंट्स मिलके जो मैंने क्लास कराया उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं. कोई करेंगे ऐसा? कौन कर सकता है? प्योर सर हिंदी में. See, अगर आप ऐसे करेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया मानेंगे सर आपका. कौन करेंगे इसको ट्रांसलेशन? कोई भी स्टूडेंट जिसको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है ना, वो मेरे बात को सुनकर यही चीज को ऐसा ही प्योर हिंदी या मराठी में ट्रांसलेट करके रिकॉर्ड वीडियो अपलोड कर सकते हैं. सो बाकी लोगों को समझ आ जाएगा. कौन करेंगे? कोई भी एक लेसन, यूनिट 1 का ये कर सकता है, यूनिट 2 का दूसरा कोई कर सकता है, ऐसा कर सकता है. तो जो ट्रांसलेट करेंगे ना उनका पूरा बहुत अच्छा समझ आ जाएगा. ओके. सर 20 साल के स्टूडेंट है भाई जी, सॉरी, तो इन लोगों को बाबा का ज्ञान तो पता है, पर ये जो क्लासेस चल रही इसमें हिंदी मराठी दोनों ही ऑप्शन नहीं है, तो वो जो चैप्टर के ऊपर समझाते वो उनको पीडीएफ भी नहीं भेजते हैं. तो ये बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं. इनके लोग के घर में बोलते हैं आपके इधर क्या सिखाते हैं, तो वो सेंटर में आके पूछते दीदी क्या करें. तो मेरा एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट के लिए, आप थोड़ा सा पीडीएफ बना के भी भेजेंगे तो ये होमवर्क कर सकते हैं. हेलो. हाँ अजीम सर. हाँ ये प्रॉब्लम को नोट किया है हमने. हाँ. और उनको सॉल्यूशन मैं आज दे दूंगा. ठीक है. एक ग्रुप बनाया हमने, उसका लिंक भेजा है ग्रुप में. तो उस ग्रुप में वो अटैच हो जाएंगे और उनके लिए सेपरेटली मैं कुछ क्लासेस या उनका कुछ किताबों का पीडीएफ जो हिंदी मीडियम में है वो मैं भेज दूंगा. हाँ, तो उनको कुछ प्रकार से गाइडलाइन मिलेगा. और ऐसे 1-2 स्टूडेंट्स है कि जिनको कुछ इंग्लिश में पूरा ब्लैंक है, तो ऐसे 1-2 स्टूडेंट है, बाकी के स्टूडेंट्स को समझ में आती है. क्वेश्चन है, इनको इंग्लिश समझ में आता है परंतु लिखने नहीं आ रहा है, उसका स्पष्टीकरण के रूप में. हाँ, तो इसमें क्या है ना कि हमने जिस प्रकार से हमारे जो एग्जामिनेशन जो है, तो हमने इस प्रकार से प्लानिंग किया है कि आप उसमें आप हिंदी मीडियम में आप एग्जाम लिख सकते हैं. और रही कि किताबों की बात बुक्स की बात रही, तो आपको एक पीडीएफ हम भेज देंगे कल. तो आपको एक ग्रुप में अटैच होना है और ग्रुप में अटैच होकर के फिर आपको ही वो पीडीएफ मिलेगा. तो बाकी के इंग्लिश जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश मीडियम की किताबें अवेलेबल है. तो आपके पास इंग्लिश मीडियम और हिंदी की भी पीडीएफ रहेगी, तो आपको आसानी हो जाएगी. अभी मेरे पास मराठी मीडियम का कोई ट्रांसलेशन वाली हम कर रहे हैं ट्रांसलेशन, तो अभी मेरे पास हिंदी मीडियम का ट्रांसलेशन वाला बुक है. तो अभी मराठी मीडियम का नहीं है, तो आपको हिंदी मीडियम मिलेगा. उस प्रकार से आपको सुविधा हो जाएगी. ठीक है जी, थैंक यू. चलेगा.